A cheerful good morning and a very warm welcome to each and every one of you present today in the science class. Before going ahead, again, little bit introduction regarding the same thing, the precautions which has to be taken by you. I request each and every one of you to take all the necessary precautions so that you as well as your family remain safe from this COVID-19. And at the same time, please take care of yourself, because as after the Diwali, the pollution level, always there is increase in the level of the pollutants basically. So please try to protect yourself from these air pollutants as well, so that you do not get sick or you do not feel into any kind of troubles with the respiratory disorders. Okay, especially the people or the students who are having asthma or some kind of respiratory problems, please remain far away from all these crackers or the harmful pollutants which are present in our atmosphere. So if you remember, yesterday we have started with our second part of the chapter, that was your water, and we have discussed what are the different properties of the water, and at the same time we also discussed what are the soluble and insoluble substances, that is all those things which gets dissolved in water, they are known as your soluble, and all those substances which do not get dissolved in water, they are known as your insoluble substances. So in this way we have completed till this part, and also we have talked about the different kinds of purification methods, that is how we will be able to purify the water if it is containing any kind of solid impurities, that is if it is containing any kind of soluble or insoluble impurities. What are the things? Let us go ahead. Sedimentation and decantation, if you remember, we have already done. I have explained you yesterday as well. Okay, so today we will be starting with our filtration, whose little bit idea or the introduction part has been already shared to you in your previous class, that was yesterday only. Okay, so let us start with our discussion with filtration, and let us try to complete our chapter if possible by today. Okay, so this was the activity of sedimentation and decantation which we have discussed yesterday only. The next process was filtration. Okay, so what is filtration? The process of removing insoluble impurities with water from water with the help of a filter is called as filtration. Okay, so if you remember, yesterday I emphasized on this word, that is your insoluble impurities, because this insoluble impurities is the main reason for carrying out this filtration process. Otherwise we would be able to comfortable, or we would be able to deal with our sedimentation and decantation process only. Okay, starting with one of the activities related to this filtration process, that is fill half of the beaker with water, mix some sand in it, tie a clean piece of cotton cloth on the mouth of another beaker. Okay, so if you remember, yesterday I told you that this filtration process requires the use of a sieve, and this sieve can be different types of materials, like it can be a sieve, it can be a muslin cloth, and here it has been taken the example of a cotton cloth. You can take that as well, and at the same time you can use a funnel as well. Okay, so now if funnel in this case will not be possible, funnel is possible when the insoluble impurities, they are very bigger in size, like your mustard seeds or the gram seeds or the pea seeds, then we can use the funnel also for carrying out this filtration process. Okay, so here we have tied the mouth of the beaker with the help of a cotton cloth with a kind of a rubber or a kind of a strip or anything like that. This cloth, it acts as a filter. When we pour water, or we pour mixture of water and the insoluble impurities on this cotton cloth, we observe that all the insoluble impurities, they remain on the top of it, whereas the clear liquid, it passes through the cotton cloth and gets collected in the beaker. Okay, so in this way we are able to separate the insoluble impurities from the water by using the filtration process. Okay, so this cloth acts as the filter. When we pour the water slowly on the cotton cloth, the sand gets collected on the cotton cloth and the clean water gets collected in the beaker. Okay, I hope you can do this activity as well. Instead of taking the sand, if you don't have, you can take your
soil particles as well. Okay, you'll be able to get the same results with it, but may be possible that since soil particles, they are much more smaller as compared to your sand particles, so some of the soil particles will be able to pass through the cotton cloth and they will be present in this water which will be collected in the beaker. But still you can go ahead and you'll be able to separate most of the soil particles with this process. Okay, moving ahead with this, removing soluble impurities and germs. Okay, now see, so till here what we have discussed is that we have discussed that is what are the different types of insoluble impurities and how we can separate it. So how many processes we have done? Basically we have dealt or we have discussed two of the main processes, as the very first was your sedimentation and decantation and the second process was your filtration. Okay, please remember that is they are for your insoluble impurities only. ठीक है, ये याद रखिएगा कि sedimentation, decantation as well as your filtration, they will be used or they are used just for the purpose of your removing insoluble impurities only. अगर कोई भी चीज़ water में soluble है तो उसको हम filtration से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, आपने कोई जूस बनाया शुगर का, ठीक है, लेमोनेड का एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, तो आप लेमोनेड से क्या करोगे, जब आप फिल्टर करोगे, ठीक है, तो वो लेमोनेड ही नीचे आएगा, बस आपके कुछ लेमन के सीड्स या फिर कुछ लेमन के पीसेस वो आपके ऊपर कॉटन क्लॉथ पे रह जाएं, बट नीचे जो लिक्विड आएगा उसमें पूरा का पूरा आपका लेमन जूस का ही टेस्ट रहेगा. सो यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट दैट. And since we are not using this filtration process for the soluble impurities, always remember that we always use the filtration process for only and only insoluble impurities. ये भी आपका आधा या एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि insoluble impurities present in the water, they are removed by the process of dash, so you will have to fill their filtration. Or the same question can be converted into true false as well, that is insoluble impurities can be separated by the process of filtration, true or false. Okay, so in this way, or give one word also the same type. Okay, that is name one of the process by which is used to separate insoluble impurities from the water. So here you can either write sedimentation and decantation, or you can also go for filtration as well. Both the answers will be correct. So in this way, please try to that. This is the main reason why I am telling you to have a very thorough reading of the chapter, so that in the exams when the questions are being asked, you don't get confused, because you have already read the chapter very nicely and each and every concepts are being clear. So whether the question is little bit twisted or it is not twisted, a direct question has been asked to you, you will be able to answer both of them and you will be able to score much more good marks. Okay, let us start. Okay, one more thing I forgot there. I hope your half yearly results have been out. Okay, you all have been received. Some of you are asking for the answers of the this half yearly portion. I will not be able to provide you that. All these answers and everything has been already provided to the examination department. Okay, you can directly consult to Nagma ma'am or to any one of the persons from your school authority. They will be able to provide you that. Okay, so please don't ask from the respective teachers, whether it is science teacher or any other teachers. You directly contact to the admin persons. They will be able to help you out in this case. Okay, I got some of the queries, that is I don't think it was in 5th, it was in 8th, so no need to discuss that. Okay, some of you wanted answers of the science question paper, so please contact to the admins, either Nagma ma'am, Supriya ma'am or anyone else, or even Rahul sir as well. You can just consult with him. I don't think he will also be able to give you, but at least you can consult with him. He will be able to guide you in a much better way. So these are the things which should be taken care of. Okay, now let us continue with our chapter part. Okay, now we are going to remove the soluble impurities and the germs which are present in this water. Okay, so this is the last page which we are going to do. And remember, this soluble impurities, you are going to one more thing,
as I keep on telling you that when you are going to study about them in detail in your higher classes, ये मैं आपको बार बार बताते चलता हूँ, ठीक है, क्यों, जिससे कि आप उसको दिमाग में रखे रहिए कि ये बेसिक है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया तो अब इसके बाद का जो लेवल रहेगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही नहीं क्लियर है तो आगे का क्लियर नहीं होगा। इन द सेम वे दिस सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, ये आपका 9th क्लास में फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्लास 9th में आपको फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा, and I hope in class 6 as well you are having this, okay, so please take care of this thing। soluble impurities काफ़ी important है from examination point of view, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा difficult process होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ dissolve हो गई है उसको आप कैसे separate करेंगे water में से, and you need both the things, okay। so let us start with this part। Okay, now removing soluble impurities and germs, we can remove certain soluble impurities and kill germs present in water by boiling and chlorination. Okay, now see two processes have been shown here in order to remove soluble impurities and germs. That is, one of the processes your boiling and the another one is chlorination. Okay, chlorination, remember, I would like to show you here. The word chlorination is made from the word chlorine, and this chlorine is what? Chlorine is a element, okay, and this element is very harmful as well, okay. It is very much toxic as well. If you have much more chlorine, then in that case you may die as well, okay. So this much harm is this chlorine. The formula for writing down chlorine is capital C and small l. This is the symbol for writing down chlorine. Just like you have for water, we write it down H2O. For hydrogen, we write H. In the same way, we have chlorine for Cl, okay. Let us go ahead with this part. So first, starting with boiling. Boiling kills most of the germs which are present in water. It also converts down some soluble impurities into insoluble ones. These impurities settle at the bottom and the sides of the container. These can be easily removed by filtration, okay. Now the best part is that is from where you can see this thing very clearly. Whenever you observe that some persons they fall sick, ठीक है, जब कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनको बेसिकली डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं, और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्सो दैट इज दे ऑलवेज प्रेफर फॉर बॉइल्ड वाटर इंस्टेड। दे हैव, though they have filters, purifiers and everything in their homes, but still they go for boiled water. Why? Because this boiled water is free from any kind of germs which are present. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बाई चांस, ठीक है, अगर कुछ उसके अंदर बैक्टीरिया या हार्मफुल पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने पढ़ा था, देयर आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल. So if any kind of harmful microorganisms is present in the water, so whenever we are going to boil them, just due to the high temperature, all these microorganisms, they will be getting killed and our water will become free from the harmful microbes, whether it is bacteria, fungi, algae or anything like that. Okay, any harmful microorganisms, basically they are bacteria and fungi only. Moving ahead, in the case of water, mostly bacteria are present. Moving ahead with this, so okay, second importance of boiling. First is killing of the germs. Second is there are some soluble impurities like calcium is there. Okay, some of the minerals are there. These calciums and everything, when you heat them or when you boil the water, these soluble impurities such as calcium and your magnesium as well, okay, they settle at the bottom. ठीक है, आप जब भी देखोगे कि आप एक बाउल में या फिर कोई भी आप एक कंटेनर ले लो और उसमें आप पानी गर्म करो, तो you will find something which settles at the bottom. That's settling all the sediments which settle at the bottom. They are basically majority of them. They are your calcium and magnesium only. Okay. Apart from this calcium and magnesium, ठीक है, और भी बहुत सारी impurities हैं जो
कि सॉल्युबल होती हैं, लेकिन जब हम उनको हीट कर देते हैं तो वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरे केस, ठीक है, आपकी जैसे बुक में दिया है आइदर दे सेटल डाउन एट द बॉटम और दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो ये साइड्स ऑफ द कंटेनर आपको फर्स्ट टाइम में बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर आप उस कंटेनर को धुले ना और बार बार उसमें पानी गर्म करते रहें, so you will be able to find that not only at the bottom but on the walls of the container as well, you'll be able to see that white colored substance which gets deposited on the inner side of the utensils. So these white color substances are basically your calcium and magnesium, and these are the soluble impurities of the water which gets separated when you boil them. Is that clear? So this was there. These are the two things which get separated when you boil water. Is that clear? That is killing of germs and separation of the soluble impurities as in the form of the sediments. Moving ahead with the next one we have is your chlorination. To kill germs, chlorine is added in small amounts to water. The tap water that is supplied to our homes is chlorinated. We can also buy chlorine tablets from a chemist shop to disinfect water at home. Iodine tablets can also be added to drinking water to disinfect it. Now see this part. आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पानी में क्लोरीन है कि नहीं है? Basically, what I know is that since most of you are nearby Durga Kund only, majority of the students are nearby Durga Kund or Samne Ghat, okay, except a few, okay. So if you have supply waters in your homes, and I hope that out of 100%, 70 to 80% of the people would be having the supply water in your homes, you would observe this thing. जब आप supply water पीते हो तो कभी कभी आप observe करते हो कि वो पानी आपको थोड़ा सा bitter लगता है, थोड़ा सा तीता, एकदम वैसा तीता नहीं, मिर्चे वाला नहीं, ठीक है, हल्का सा bitter, कड़वा, आप कड़वा कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कड़वा लगता है, ओके. सो व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस पार्ट, देखिए जब वो सप्लाई वाला पानी आपको कड़वा लगता है, सो दैट इज द डे, और वो ऐसा टाइम होता है कि जब आपका क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में पड़ गया है, ओके. बेसिकली यू नो द पीपल हु आर एडिंग द क्लोरीन टेबलेट्स और द क्लोरीन पाउडर्स, जो पानी की टंकियाँ होती हैं जहाँ से सप्लाई होता है पानी, उस पानी की टंकी में हम क्या करते हैं, आप देखते हो बड़ी बड़ी पानी की टंकीज होते हैं जगह जगह पे, उन पानी की टंकीज में क्या रहता है, क्लोरीन पाउडर या क्लोरीन टेबलेट्स हम डाल देते हैं. सो ये क्लोरीन पाउडर्स या फिर क्लोरीन टेबलेट्स जब डाल दिए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उनकी अमाउंट्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़कर हो जाती है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल रहता है. तो कम ज़्यादा का तो कम और नॉर्मल का तो आपको नहीं पता चल सकता, लेकिन जब वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हल्का सा भी ज़्यादा हो जाता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट बिटर इन टेस्ट, कड़वा होने लगता है. एंड दैट इज़ द डे व्हेन यू ड्रिंक दैट वाटर एंड यू फील दैट यस, आज का पानी थोड़ा सा कड़वा है. Okay, so this is the way basically all these things. वहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया chlorine is very much harmful, और बुक में भी आपके यही लिखा हुआ है कि this chlorine should be added in very small amounts. Why? Because it is very much toxic in nature, very much harmful in nature. Okay, UV radiations का भी हम यूज़ कर सकते हैं जर्म्स को मारने के लिए, ये भी याद रखिएगा. जितने भी आपके प्यूरीफायर्स होते हैं घर में, ठीक है, उसके अंदर यूवी लैम्प्स होते हैं, एक छोटा सा बल्ब होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर यूवी लैम्प ओनली, दैट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर बाय किलिंग एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स व्हिच माइट बी प्रेजेंट इन योर वाटर. ओके, next is that in along with the chlorine we can also add iodine tablets as well to disinfect the drinking water, making water fit for drinking. Okay, when we are asking about this part, that is how to make this water fit for drinking purpose. So first is that the simplest way to make drinking water safe at home is to filter and boil it for 15 to 20 minutes. We also use commercial water filters for filtration, जो हमने अभी बात किया, एक्वागार्ड, केंट, RO, ये सारी चीज़ें. ओके, दे कम अंडर द कॉमर्शियल वाटर फिल्टर्स फॉर फिल्ट्रेशन. सम फिल्टर्स हैव अ कैंडल मेड ऑफ फिल्टर पेपर एंड अ सिरेमिक मटेरियल. देखिए ओके, अभी तो जहाँ तक मुझे याद है वो दिवाली की सफाई में तो शायद जा चुका है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको वो कैंडल दिखाता. कैंडल इज नथिंग बट आप इस तरीके से समझ लो,
ठीक है, ये है, ठीक है, सपोज दिस इज योर कैंडल, दिस पेन इज रिप्रेजेंटिंग द कैंडल एंड दीज आर द क्लोथ्स, ओके, और ये पूरा होता है, मतलब इस तरीके से पूरा कवर्ड रहेगा, ओके। मैं आपको एक जगह का करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये पेपर को आप, ठीक है, और ध्यान से देख लीजिए, इसको आप कई बार इसमें रैप कर दीजिए, ओके, wrap it a number of times here. Okay, so when you wrap it a number of times, what do you observe? That is, this cloth has become many layered, कई सारे layers हो गए। जब इसके ऊपर से पानी जाता है तो इस क्लॉथ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब पानी इसके अंदर से जाता है तो पानी की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि हर एक लेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, अगर पहले लेयर में सेपरेट हो गया तो वेल एंड गुड, दूसरे में गया तो दूसरे में, तीसरे में गया तो तीसरे, तो इस तरीके से अराउंड 50 और 100 लेयर्स आर बीइंग प्रेजेंट, विच इज़ नोन एज योर बेसिकली कैंडल, ओके। And this candle is being changed at every month of 6 to 8 months. We should change the candle, okay. Okay, some filters have a candle made of filter paper or ceramic material. Both of them have very tiny holes that trap the impurities, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. They allow the clean water to pass through. We must clean or replace the filter candles at regular intervals to get rid of the trapped impurities. ठीक है, मतलब इस कैंडल को हमें बार बार या तो वॉश करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, या तो फिर हमें रिप्लेस मीन्स बदल देना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स, जिससे कि वो ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज धीरे धीरे हमारे वाटर में ना आए. सम वाटर फिल्टर्स यूज अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल जर्म्स एज वेल. ये वो यूवी लैम्प की बात जो मैंने अभी आपको बताया है. ओके, दे यूज अल्ट्रावायलेट लाइट्स टू किल जर्म्स. We now use reverse osmosis, that is RO purifiers, to purify drinking water. Okay, so the water that is supplied to our homes is taken from the lakes and rivers. It is purified at the water treatment plant by sedimentation, filtration and chlorination before being supplied to our homes. ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको पता चल गया कि कोई एक प्रोसेस नहीं है कि जो है हम खाली एक प्रोसेस कर दिए और उस पूरे वाटर को सप्लाई कर दिए. नो, ओके, इट विल बी वेरी मच हार्मफुल और इट विल बिकम वेरी मच डेंजरस फॉर द एंटायर लिविंग फॉर्म्स. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस, मतलब कुछ आपने पढ़ा कि सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, कुछ आपने पढ़ा इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए. सो बोथ दीज प्रोसेसेस, मतलब सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे वाटर को प्यूरिफाई कर देते हैं, फिट कर देते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एंड देन ओनली इट इज बीइंग सप्लाइड टू आवर होम्स फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पसेस. ओके, सेम पार्ट. ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. अभी जैसे यहाँ पे खाली बोल दिया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली 6th या 7th में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि सेडिमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें रिमूव होंगी, डिकेंटेशन में क्या क्या होगा, ठीक है, सेटलिंग टैंक्स में क्या क्या होगा, क्लोरिनेशन कब होगा, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे. अभी आपको खाली ओवरव्यू दे दिया गया कि कैसे कैसे प्यूरिफाई हो सकता है. ओके, मूविंग अहेड विद दिस, नेक्स्ट वी हैव द डिस्टिल्ड वाटर. नाउ एज दिस वर्ड कंटेन्स distilled water, so first and the foremost thing I would like to show you this part again. As you know that each and every scientific word has the meaning hidden in it. Okay, so this distilled water is named after the process of distillation. Okay, distillation क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है, प्योर वाटर को हम निकालते हैं और इस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं. ओके, सो इस प्रोसेस के नाम पे ही इस वाटर का नाम पड़ गया डिस्टिल्ड वाटर. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ये डिस्टिलेशन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका डबल डिस्टिलेशन होता है. ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते हैं. ठीक है, डबल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इस तरीके से जितने भी हैं, ठीक है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये सारे कौन कौन से
डिस्टिलेशन प्रोसेसेस हैं। ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन है, इसके बाद फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर डबल डिस्टिलेशन, ऐसे आप करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज एंड इन कार बैटरीज। टू ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर इज अलाउड टू बॉयल फर्स्ट। ओके, नाउ सी यूजेस कहाँ कहाँ हैं। साइंस के लेबोरेटरीज में हम इसको यूज करते हैं, कार की बैटरीज में भी हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए जो बैटरी वाला पानी होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्टिल्ड वाटर ओनली। ओके, नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस डिस्टिल्ड वाटर? इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज टू अलाउ दिस वाटर टू बॉयल अप। ओके, आफ्टर बॉइलिंग, okay, it changes into water vapor, leaving behind all the dissolved impurities, जैसा कि हम boiling में देखे थे। The vapors are collected and condensed in another container to obtain the distilled water. This process is known as distillation. Okay, the few drops seen on the leaves of plants early in the morning are examples of the distilled water found in nature. The small water drops seen under the lid of a cooking pot are also your distilled water only. Okay, so water comprises nearly 73% of the human heart and brain, 83% of the human lungs, 64% of the human skin, even bones have about 31% water in them. अब इसको समझिए कि ये है क्या, कैसे ये प्रोसेस होता है। See, when you start heating from the bottom of this distillation flask मतलब बर्तन और कंटेनर, क्योंकि हम इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो इसीलिए इसका नाम डिस्टिलेशन फ्लास्क कर दिया गया है। This is the impure water which is having some or the other impurities in it. Okay, this is the burner which is supplying the heat, and this is your tripod stand. जब आप laboratory tools पढ़ेंगे next class में, so or then you will be able to study about this tripod stand which is used for keeping the utensils or containers for burning or heating it. Okay, अब ये देखिए क्या है, ऊपर से चैम्बर ये सील है, ठीक है, कैप लगा हुआ है कि मतलब यहाँ से वेपर्स निकल नहीं सकते हैं, और ऊपर से ये क्या किया है, एक ओपन कर दिया है, जहाँ से एक ओपन है, इधर ओपन है और यहाँ पे हमने दूसरा कंटेनर रख दिया है। सो व्हेन यू हीट इट, व्हाट विल हैपन? वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, एंड व्हेन इट विल बॉयल, वाटर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। अब वाटर वेपर्स ऊपर से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्या है, पूरा का पूरा पैक है, तो वाटर वेपर विल नॉट बी एबल टू कम आउट एंड दे विल फाइंड ओनली दिस वे टू गो देयर। उनके पास खाली यही रास्ता बचेगा कि वो निकल सकते हैं। और आपने पढ़ा भी है कि वाटर एक्सपैंड्स, सॉरी गैसेस एक्सपैंड, तो उनको जहाँ जगह मिलेगा वो उसी तरफ क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे। एंड द मोमेंट दे विल रीच हियर, वो जैसे यहाँ पे काफ़ी गर्म है क्योंकि नीचे से हीट प्रोवाइड हो रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो ठंडा होने लगेगा। ठंडा होते होते क्या रहेगा, जब यहाँ पे आएगा तो और ठंडा हो जाएगा, और वाटर वेपर or the gas gets converted into liquid again by the process of condensation. Condensation क्या है? The process by which gas gets converted into liquid. तो गैस यहाँ पे था, क्यों? क्योंकि गर्म था, इधर ठंडा हो गया अपने आप, तो क्या हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इट गेट्स कलेक्टेड इनटू दिस चैम्बर, एंड दिस इज नोन एज योर बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर। ओके, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो लास्ट में यही नीचे बच जाएंगी। इज दैट क्लियर? नाउ सी, in this way we have completed this entire chapter. Okay, and I request each and every one of you to have again the thorough reading of this entire chapter, and please write down these keywords as define the following terms. अब दोबारा मत पूछिएगा कि सर प्लीज मुझे define the following terms भेज दीजिए, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, PDF पहले से ही अपलोड है, आप इसको अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। ओके, exercises and everything we will be discussing the next Monday when we'll be having our class here. Is that clear to all of you? So this was all for today. In this way we have completed our entire chapter. Okay, thanks a lot for being with me, and at the same time please take all the necessary precautions and take care of yourself as well. Okay, thanks a lot for being with me. Have a superb day ahead. Thank you.